How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. This is Mrs. Amolika, your English teacher for class 1, and this is your English reader book. Today we will learn about chapter 3, A Foolish Lion. Your story name is A Foolish Lion. In this lesson, there is a lion who kills animals to feed itself. But a clever rabbit thought a plan to escape from being killed. Rabbit convinced the lion that there was another lion in jungle and wants to kill him, and with the wise plan he made lion to peep into the well. The lion got confused with his reflection and jumped into the well, and the foolish lion died. Then all animals were happy and thanked Chiku the rabbit. So this is the story, the gist of the story. Okay, and please read it at your home, this story. Now we will start from the word meanings, and this is your words and this is the meaning. Fawn. What is the meaning of fawn? Child of a deer. Child of a deer. Den. Cave. Burrow. Home of a rabbit. Burrow. Home of a rabbit. Peep into means look into. The lion look into the well. Peep into means look into. Okay, so these are the word meanings. Please write it in your notebooks. Now exercise. When you read the story, then you know the lion killed a fawn. You can take the fawn. Who thought a plan? A rabbit thought a plan. The lion jumped into the well. Now fill in the blanks. It is a full moon night. It is a full moon night. दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक ऑप्शन चूज करना है. ओके. गुड मॉर्निंग योर हाइनेस. टिक द हाइनेस. टिक दिस ऑप्शन and write it here. He is roaring back to you. He is roaring back to you. Come to the true or false. जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनके आंसर्स. द एनिमल्स वर हैप्पी विद द लाइन. फॉल्स. Bear told a plan. No. False. Who told the plan? Who tell the plan? Sorry, who told the plan? Rabbit. The Chiku. Chiku. Okay. Chiku took the lion near a well. True. The lion does not jump into the well. False. Now come to the question answers. Answer the following questions. And these are the question answers. Why was the deer crying? Why was the deer crying? Deer was crying because lion killed her lovely fawn. Deer क्यों रो रहा था? क्योंकि because lion killed her lovely fawn. उसने उसके बेबी लवली बच्चे को, fawn को मार दिया था, deer के बच्चे को. Who was Chiku? Who was Chiku in this character? In the story, sorry. Chiku was the rabbit.
वो एक रैबिट था, उसका नाम चीकू था. नाउ व्हाट डिड चीकू टेल द लायन? चीकू ने लायन को क्या बताया? चीकू टोल्ड द लायन and another lion says he is the king of the jungle and he will kill you. फिर से देखेंगे प्लीज. What did Chiku tell the lion? Chiku told the lion and another lion says he is the king of the jungle and he will kill you. Question number 4. Was there another lion in the well? No, there was a reflection of the lion in the well. वहाँ पर दूसरा लायन था कुएं के अंदर? नहीं, वहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन था. जो लायन अपने आप को देख रहा था वेल में, पानी में उसका रिफ्लेक्शन था. Now question number 5. How did the lion die? Lion कैसे मरा? The lion jumped into the well and died. जब लायन ने वेल के अंदर, कुएं के अंदर जंप किया, तब वो मर गया. Now grammar zone. See the pictures and then write in singular or plural. मैं आपको बता चुकी हूँ सिंगुलर और प्लूरल का मतलब. सिंगुलर मीन्स वन थिंग एंड प्लूरल मीन्स बहुत सारी चीज़ें. ओके, बुक्स हैं यहाँ पर, तो वो एक है या बहुत सारी हैं? देयर आर सो मेनी बुक्स. प्लूरल. ओके, नाउ सिंगुलर. सिंगल है, डॉग अकेला है, एक है. सिंगुलर. नाउ देयर आर सो मेनी मंकीज. प्लूरल. सेम आपको यहाँ करना है. सिंगुलर, प्लूरल एंड सिंगुलर. नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स. ये वर्ड्स दिए हैं आपको, उनके सेंटेंसेस बनाने हैं. प्लीज क्राई. फर्स्ट वर्ड इज क्राई. प्लीज डोंट क्राई. प्लीज डू नॉट क्राई. डोंट भी लिख सकते हैं आप, डू नॉट भी लिख सकते हैं. प्लीज डोंट क्राई. प्लान. आई हैव अ प्लान. आई हैव अ प्लान. इनसाइड. द लायन लिव्स हेयर इनसाइड द वेल. The lion lives here inside the well. Now king. The word is king. The lion is the king of the jungle. Now complete the spelling of the given words. Complete the spelling of the given words. Attack. A-T-T-A-C-K. Attack. Fawn. F-A-W-N. Fawn. Burrow. B-U-R-R-O-W. Burrow. Highness. H-I-G-H-N-E-S-S. Highness. Jungle. J-U-N-G-L-E. Jungle. Peep. P-E-E-P. Peep. Roar. R-O-A-R. Roar. मतलब दहाड़ना. Reached. R-E-A-C-H-E-D. Reached. Okay, so these words are given here. Please fill it. Now speak aloud the given words. Attacks. Front. Challenging. Fawn. Roaring. Burrow. Another. Echo. Dared. Inside. These are the words. इनको आपको ज़ोर से बोलना है. Speak loud. Okay. Now come to this page. Be creative. This is your homework. यहाँ पर आपको वाइल्ड एनिमल्स लिखने हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स लिखने हैं. आपने UKG क्लास में पढ़े भी हैं.
एंड 10 एनिमल्स के नाम लिखने हैं यहाँ पर और उनके बारे में सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, complete the table with the names of wild animals and domestic animals. Okay, wild animals and domestic animals. 5 लिखने हैं आपको. यहाँ 5 ब्लॉक्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5. तो आप यहाँ पर 5 डोमेस्टिक ले लीजिएगा और 5 वाइल्ड एनिमल ले लीजिएगा और उनके ऊपर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. थैंक यू.